ओके स्टूडेंट, सो अभी हम लोग नेक्स्ट सम देखेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक नया टाइप है। ठीक है, तो जहाँ पे वी नीड टू प्रूव समथिंग। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करने का है? सो दैट इज 1 + i√3 रेज टू 8, देन प्लस 1 - i√3 रेज टू 3 इज इक्वल टू -2/8। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसको प्रूव करना है कि बाबा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैं क्या करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये किस कौन से फॉर्म में है? आई हैव दिस इक्वेशन इन द कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म में है, ये भी कार्टेशियन फॉर्म में है। तो इसको पहले मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, सो हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू द पोलर फॉर्म? सो लेट्स सी दैट फर्स्ट। ठीक है, सो फर्स्ट तो सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे? इसको पहले पोलर फॉर्म में लिख देंगे। So let us write 1 + i√3 the whole raised to 8 into the polar form. So polar form में होता है मतलब exactly what is the polar form? तो polar form मतलब क्या है? One second. Polar form मतलब basically क्या होता है? That is r bracket open cos theta plus i sin theta. ये फॉर्म में लिखूंगा मैं, बराबर है? राइट, सो दिस इज माई पोलर फॉर्म। एक्स मतलब आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पे व्हाट आई नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ आर। दिस इज आर, ओके, एंड आई नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये दो अगर वैल्यू मिलता है तो मैं इसके अंदर डाल दूंगा। ओके, आई विल फाइंड वैल्यू ऑफ आर, आई विल फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, राइट, and I'll put into this equation. So this equation, that is this equation, I'll write in the form of polar form basically. ठीक है, and this is your polar form, that is r cos theta plus i sin theta. Okay, r bracket open cos theta plus i sin theta. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कुछ रूल्स है वो हम लोग देखते हैं अभी। सो ये दिस इज माई एक्स, ओके, दिस इज माई एक्स, ओके, एंड दिस इज माई वाई। Okay, so my x is equal to 1. Okay, so x is equal to 1 and y is equal to what? Y is equal to √3. Okay, so यहाँ पे क्या होगा? What is my r? So मैंने क्या बोला था? What is your complex form? Sorry, polar form में क्या होता है? What is your polar form? So polar form में क्या होता है? ये equation होता है r, okay, cos theta plus i sin theta, बराबर है? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? आई नीड टू फाइंड वैल्यू, एज आई सेड, आई नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ आर, आई नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, तो ये कैसे फाइंड करूंगा? तो आर का एक फॉर्मूला होता है। सो आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो मेरा एक्स क्या है? व्हाट इज माई एक्स? एक्स इज इक्वल टू 1, सो माई आर विल बिकम, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स इज 1, दैट इज 1 स्क्वायर, प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट? √3, सो √3 का स्क्वायर। Okay, so my r will become, that is root of 1 plus 3, which is equal to root of 4, which is equal to 2. So I got the value of r, so this is my r is equal to 2. And for theta के लिए क्या करूंगा मैं? So I can find theta, so theta is equal to, so basically cos theta. Okay, one second. So basically theta is equal to so cos theta is equal to x upon r. So this is the formula. You can remember this. So x is, cos theta is equal to x upon r. So what is my x? So my x is equal to 1, okay, upon r is equal to 2. Okay, so my theta will become, so theta is equal to what? Cos inverse of 1 upon 2. So what is cos inverse of 1 upon 2? It is 60, right? So which is equal to 60, that is equal to pi by 3, right? If okay, you can also find theta by sine theta. Okay, so sine theta is equal to what? Sine theta is equal to y upon r. Okay, so what is your y? So it is √3 upon 2, r is equal to 2. So theta, again theta will become sine inverse of, once again, okay, so theta will become, okay, so theta is equal to what? Theta is equal to sine inverse of √3 by 2. Okay, again, which is equal to pi by 3. So either you take cos theta is equal to x upon r, okay, or you take cos theta is equal to x upon r. ठीक है, ये ले लो आप फॉर्मूला, और व्हाट यू कैन डू, you can take cos theta is equal to x upon r, okay, or you take cos theta is equal to x upon r, okay, or you take cos theta is equal to x upon r, ठीक है, ये ले लो आप फॉर्मूला, और व्हाट यू कैन डू, you can take cos theta is equal to x upon r, okay, or you take cos theta is equal to x upon r, okay,
ओके, ठीक है, एनीवेज, cos theta equal to x upon r या फिर sin theta equal to y upon r, you are going to get the same theta, that is pi by 3, which is 60. And this is the formula for finding r, that is r is equal to root of x square plus y square. Okay, so if you have understood this, then we can go ahead and we can write this equation, that is 1 plus I root 3. I can write it as, तो ये मेरा इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं मैं, सो माई इक्वेशन विल बिकम दिस आर, आई विल पुट आर का वैल्यू हियर, ठीक है, see, I'll put r ka value here. So what is my value of r? So r is equal to 2 bracket open cos of pi by 3 plus I sin pi by 3. Have you understood this? If yes, then definitely we can go ahead. Okay, so इधर तक समझा है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है. I'll just write it down everything. So instead of, as I said, instead of 1 plus I root 3, I'll write 2 cos pi by 3 plus I sin pi by 3. This is what I am going to write. Okay, this is what I am going to write. So instead of 1 plus I root 3, I'll write 2 bracket open cos pi by 3 plus I sin pi by 3. And how I got the value of r and how I got value of pi by 3. So you can, like, for each and every sum, you can like follow this process to find value of r and theta. Fine. Okay, so moving ahead. So since 1 plus I root 3 is r cos theta plus I sin theta, so r is equal to what? R is equal to root 2, r is equal to 2, and cos x upon r is equal to 1 upon 2, and sin theta is equal to y upon r, so it is root 3 upon 2. So either you take cos inverse of 1 upon 2, sorry, cos inverse of 1 upon 2, okay, or you take sine inverse of 3 upon 2, you are going to get the same theta, which is like pi by 3, and this is the value of r, that is 2. I'll put both these value in this equation. So here I'll put r and here I'll put theta, right? So I'll just rewrite the equation. One second. So my equation will become, that is 1 plus I root 3 will become 2 into cos pi by 3 plus I sin pi by 3, right? Now you can see that in the second case also, like my x is same, so here it is 1, here also it is 1, my y is same, that is root 3 and root 3. So I am going to get the same angle and the same theta, right? Same theta and the same radius. My radius will also remain same, and my theta will also remain same. Okay, so what will change? Just sign will change, and what I am going to get then? So basically I can write the second equation also in the polar form. So my entire equation will become, right, so it will become like, instead of this, okay, I'll write 2 cos pi by 3 plus I sin pi by 3 raised to, here should be 8. ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे जस्ट चेंजेस कर लिया है, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे 3 कहाँ कहाँ पर था, उसको ये 8 है बेसिकली, तो ये 8 मैंने चेंज कर दिया है. सो इंस्टेड ऑफ दिस, एज आई सेड, हमने लिख दिया है दिस, एंड इंस्टेड ऑफ दिस आई हैव रिटन दिस. ओके, और सारा पावर जो है, ऑल दिस पावर्स आर 8. ठीक है, तो ये अगर आपको समझा है, तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं डी मूवीज थ्योरम लगा दूंगा, राइट. तो अप्लाइंग डी मूवीज थ्योरम, अब मैं क्या करूँगा, ये जो 8 है, डी मूवीज थ्योरम क्या बोलता है, ये 8 को मैं अंदर लेके आ सकता हूँ. सो इट विल बिकम लाइक व्हाट, cos 8 पाई बाई 3 एंड आई sin 8 पाई बाई 3. ये जो 8 है, ये मैं नीचे यहाँ पे लेके आऊँगा और यहाँ पे लेके आऊँगा. ये 8 जो है, ये यहाँ पे लेके आऊँगा और इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, राइट. तो वही बस हमें करना है. ओके, आई जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन. सो बाय डी मूवीज थ्योरम, सेकेंडली ये जो 8 है, ये पावर में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये 8 जो है, ये पहले 2 raised to 8 हो जाएगा, देन cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3, ब्रैकेट के ऊपर भी 8 आ जाएगा, राइट. सो यहाँ पे एक 8 आ जाएगा और यहाँ पे एक 8 आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे एक 8 आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे एक 8 आ जाएगा. और उसके बाद जो है आपका ये 8 जो है, ये अभी यहाँ से यहाँ पे उतरेगा और एक यहाँ से यहाँ पे उतरेगा. ये 8 यहाँ से यहाँ पे आएगा
और एक 8 यहाँ से यहाँ पे आएगा, राइट। दिस इज बेसिकली, यहाँ पे हम लोग डी मूविस थ्योरम लगा रहे हैं, राइट, यहाँ पे हम डी मूविस थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है। सो so this is what it will become, 2 raised to 8 cos 8 pi by 3 plus I sin 8 pi by 3, and then 2 raised to 8 cos 8 pi by 3 minus I sin 8 pi by 3। ठीक है, अगर हमको इतना समझाए तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है। आई विल ओपन द ब्रैकेट and then this term. So basically when I'll open the bracket, then this plus I sin 8 pi by 3 and this minus I sin 8 pi by 3 will get cancelled, and I left with क्या क्या बचेगा मेरे पास, 2 raised to 8 will come out common, and then cos 8 pi by 3 and cos 8 pi by 3 बचेगा, ठीक है। तो मैं I'll just rewrite the equation, you will be left with this, that is ये दोनों टर्म कैंसिल हो चुका है, राइट। ये I sin 8 pi by 3 and minus I sin 8 pi by 3 will get cancelled, and you will be left with 2 raised to 8 cos 8, ये एक टर्म बचेगा और ये एक टर्म बचेगा, ठीक है। इसमें से भी क्या होगा, 2 रेस टू 8 कॉमन है, बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा cos 8 पाई बाई 3 प्लस cos 8 पाई बाई 3, दैट इज 2 cos 8 पाई बाई 3 हो जाएगा, राइट। तो इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं। सो यू विल बी लेफ्ट विद दिस, ठीक है, 2 रेस टू 8 2 cos 8 पाई बाई 3 कैसे हुआ, ये 2 रेस टू 8 कॉमन आ गया, एंड 8 cos 8 पाई बाई 3 प्लस cos 8 पाई बाई 3 विल बिकम 2 cos 8 पाई बाई 3, ठीक है। सो दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या होगा, now it's simple trigonometry. So what I need to find is, now I need to find cos 8 pi by 3 का value that I need to find. So I'll take the scientific calculator, ठीक है। So this is basically, so cos okay, so I'll take what in degree radians, so in radians I'll take cos, okay, so 8 pi, so 8 pi 8 pi upon 3, okay. So I'm getting, that is 0.5, so that is minus 0.5, which is minus 1 upon 2, ठीक है। So I'll write, so what my equation will become, so I'll get this minus 1 upon 2, now this 2 and this 2 will get cancelled, and I'll be left with what, minus, I'll left with minus 2 raised to 8 is equal to minus 2 raised to 8, right. So I'm left with minus 2 raised to 8. So this is what my answer is, this is what my RHS is. So that's it.